हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू चक्र एकेडमी। आई होप दैट तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम की, एज यू हैव योर बोर्ड एग्जाम आफ्टर 3-4 days. सो आज के सेशन में आई हैव टेकन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ट्रायंगल्स. ठीक है, आई होप दैट यू गाइस वुड हैव सीन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे दे आस्क व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो फॉर्म, करेक्ट, इन विच अ पर्टिकुलर person is moving at a particular speed. So they ask you to calculate the length of the shadow. So this question is very commonly asked in your board exam. बार बार पूछते हैं वो लोग. So let's understand how to deal with these kind of questions within 1 minute. Within 1 minute, you should be able to solve. And the thing is that once you understand the concept of similar triangle, how to prove that triangles are similar, so कुछ ज़्यादा time नहीं लगने वाला है, फटाफट आप solve कर सकते हो. So you can say that this question what we have taken is basically application of similar triangle. ठीक है, तो let's understand that how to visualize that similar triangles are formed here. So what is happening here? A girl of height 90 centimeter is walking away from this pole. ठीक है, this girl is walking away from the pole at a speed of 1.2 meter per second. And the length of the lamppost is also given. Find the length of her shadow after 4 seconds. Suppose girl ने यहां से move करना start किया and the girl started moving and at t equal to 4 second girl is standing here. ठीक है, so उसका shadow कहाँ है? उसके आगे form होगा in the front. So this is basically the length of the shadow and this is the position of the girl at t equal to 4 second. Correct? तो हमारे पास बहुत सारे dimensions given है. Let's see how to use it. So this figure may not be given to you, so you should be able to draw the figure. So you can take this length of the lamp post as one side of the triangle. So if you see that there is a bigger triangle ABE and the girl is standing here. So this is a triangle CDE. So we have two triangles. So let's write down the triangle ka name. So triangle ABC, not C, ABE. And we have the other triangle. What is the triangle? CDE. Right? So first we need to prove that are they similar or not? Yes, they are similar. They are. कैसे prove करेंगे? This angle is 90. This angle is 90. Right? These two angles are 90 and this angle is common. So by double A, you can take that these two triangles are similar. So angle ABE 90, angle CDE 90 and this angle is common. So by double A, these two triangles are similar. Okay, if you want me to write down the condition, I can write down the condition here also. Angle ABE is equal to angle CDE, which is 90 degree. Okay, and you can say that angle AEB is equal to angle CED. Okay, or you can say angle E is common, anything is fine. Okay, so by double A, these two triangles are similar. When two triangles are similar, the sides are equal. No. When triangles are congruent, then sides are equal. In similar triangle, the corresponding sides are proportional. This is the point you need to keep in mind. Corresponding sides are proportional. So what can I write? AB by CD. Corresponding sides will be equal to BE by DE. Any other pair possible? Yes. AE and CE. Right? By CPST, corresponding parts of similar triangle. If you see carefully on the board, मुझे कौन सा pair चाहिए? How will I decide that out of these three pair, which two pair should I pick? This height is given, this height is given. So AB and CD is given. So it means that this one I will pick for sure. What else? Length of shadow is asked, which is DE. So DE is coming in which one? This one. So I will pick this one and this one. Right? So फटाफट value डाल देते हैं. So what is AB? Length of the lamp post. So length of the lamp post is how much? 3.6 meter. CD is what? Length of the girl. See, the length of the girl is basically given in, what is the length of the girl given? 90 centimeters, or height of the girl. 90 centimeters. Centimeter, convert into meters. So 0.9. BE. So before BE, let's write D. DE is basically only the length of the shadow. ठीक है, DE ही length of shadow है जो हमें find करना है. Now what is BE? ध्यान से देखो, very careful. BE is DE plus BD, right? और BD क्या है? BD is the distance moved by the girl in 4 seconds.
डिस्टेंस मूव बाय द गर्ल इन 4 सेकेंड्स। तो हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस? डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन इज 4। तो व्हाट विल बी बीडी? डिस्टेंस मूव्ड बाय द गर्ल इन 4 सेकेंड्स। सो 1.2 into 4 which is 4.8। तो हमारा बीडी कितना हो गया बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्पीड इंटू टाइम। तो 1.2 into 4, 4.8 प्लस डीई। तो सॉल्व कर लोगे यार। ओनली अननोन इज डी, सो दिस विल बिकम व्हाट? डेसिमल उड़ा दो। 9 4 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 डीई इज इक्वल टू हाउ मच? 4.8 प्लस डीई। सो ये कितना हो गया? 3 डीई इक्वल टू 4.8। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा। वी गॉट द आंसर 1.6 meters। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो? 1.6 meters। सिंपल क्वेश्चन है, बट इट इज अ वेरी नाइस एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हम पढ़ सब कुछ लेते हैं दैट सिमिलर ट्रायंगल का व्हाट इज द प्रॉपर्टी, बट दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एंड सिमिलर ट्रायंगल यू विल यूज अ लॉट इन फिजिक्स इन 11th and 12th। मैथ्स में भी यूज करेंगे एंड फिजिक्स में भी। So similar triangle is a topic which you need to understand in depth and you need to learn how to apply that in the real life problems। ठीक है, तो let's move to the next question। एक क्वेश्चन और लिया मैंने, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। There is a vertical pole of length 6 meter। It casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time, टाइम सेम है, हम दो पोल को ऑब्जर्व कर रहे हैं एट द सेम टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, एट द सेम टाइम। उससे एक एक्स्ट्रा कंडीशन मिलेगी हमें। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो चलो थोड़ा फटाफट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो जो पहला केस है, केस वन क्या है मेरे पास? दैट द वर्टिकल पोल इज 6 मीटर। ठीक है, इट कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। ठीक, so this is a shadow which is 4 meter। So let's name this triangle A B C। Now they are telling that there is one more tower which is casting a shadow of 28 meter long। 28 meter long का shadow है। So if this is the pole 28 meter long, so you can name this as DEF। Correct? So pole is standing on the ground, obviously pole should be perpendicular। ठीक है, pole should be perpendicular to the, ऐसा नहीं होना चाहिए pole की लटका हुआ है। So that every time you pass through the pole you will feel that pole will fall। So by default pole will be vertical on the ground। ठीक है, so if you see these two triangles, are they similar? शायद ये सिमिलर है, ये पहले फाइंड आउट करते हैं। तो वन कंडीशन यू कैन से कि सर 90 डिग्री 90 डिग्री तो दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताया था? दैट यू आर ऑब्जर्विंग द शैडो एट द सेम टाइम ऑफ द डे। So when the sunlight will pass through this angle and this angle will be equal। Why? Because it is the same time of the day। So sunlight will pass through the tip of the tower at the same angle because time same है। ठीक है, so this angle and this angle will be equal and 90 डिग्री 90 डिग्री एंड दो एंगल इक्वल हो, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा, राइट? ठीक है, तो इसमें कोई डाउट मत रखो कि सर तीसरा वाला ऑब्वियसली यार वो भी इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर बाय डबल ए और ट्रिपल ए। ठीक है, तो यहां पे फटाफट लिख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईएफ। ठीक है, बाय डबल ए। मैंने कंडीशन बता दिया, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग लिख लेना। कंडीशन मत भूलना भाई, लिखना। डायरेक्टली नहीं लिख सकते तुम, बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग है। स्टेप मार्किंग मतलब लिखने वाला स्टेप, डांस का स्टेप नहीं। ठीक है, तो वहां पे तुमको स्टेप लिखने हैं अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू है तो कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेम क्वेश्चन अगर एमसीक्यू पूछ लिया जाए तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो उसको फिंगर टिप्स पे, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर लॉन्ग आंसर टाइप है, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, यू नीड टू राइट डाउन द कंडीशन कि व्हाई दे आर सिमिलर। ठीक है, तो लेट्स टेक एक्सक्यूज मी द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो AB and DE, so AB by DE and then corresponding side BC and EF। BC and EF, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। AB कितना है? 6। DE फाइंड करना है, दैट इज द हाइट ऑफ द सेकंड टावर। BC कितना है? 4। ये कितना है?
28। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो मैं तुम सीधा बता देता हूं, देखो कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। ये क्या मल्टीपल है, 4 7 28। ये कितना होना चाहिए, 6 7 42। ठीक है, वही मैं बोल रहा था, अगर ये एमसीक्यू है तुम इसको डायरेक्टली लिख के सीधा बोल सकते हो कि 7 टाइम्स होना चाहिए, तो 42 आंसर है। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 7 28, 6 7 42, तो कितना आंसर हो गया, 42 मीटर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। सी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट द मीडियन ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर गिवन। ठीक है, या एंगल बाइसेक्टर गिवन है या परपेंडिकुलर गिवन है, तो वहां पे वो ये पूछते हैं दैट इफ द बिगर ट्रायंगल इज सिमिलर, ठीक है, will the ratio of the corresponding side be same as the ratio of their median? Will it be same as the ratio of their perpendicular bisector or angle bisector? ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा हुआ है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, तो डू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन, इट इज अ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं ट्रायंगल पे, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। तैयारी अच्छे से करो। चक्रू एकेडमी इज विथ यू। सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो।